Hello, welcome back to my channel. Help Kenaga. Moi aji kobala mon thaka itu sohludo. Nagaland YouTuber itu revival crusade. Aru itu healing festival lolaga. Opode olop moi laga babana ki thakise. Itu aru share problem mon hoigine ahi ase. Mokan YouTuber sai shawleto ekta ekdom dangor asurit lagia laga. Mokan itu paigina ase. Hila mane sob se dangor Nagaland manu jama kore laga. Mokan itu dikhibo parise. Etta jaga debi iman manu nishina ki logde jama kuri kine meeting kura laga ki laga program hole bi lo laga mokan itu hunibo para nai hole bi etta itu history itu ekta history bana dia laga dikhibo parise beshi manu bi itu khushi pai kine isor laga kotha hunibole mon hoi kine thaka laga mokan itu dikhibo parise Nagaland mokan itia saise hole Christian spirit to harana moi itu dikhibo parise beshi manu itia isola kotha itu hunibole mon hoigine isola kotha itu ekdom thirst aru hunibole mon hoigine khabole mon hoigine ready thaka laga mokan itu dikhibo parise itu nimte mokan arubi religious leaders kan inaka laga revival arubi mokan itu contact kuribo lage moi inaka babi ase Ruby inaga program tangor inaga contact kurise bole bishi manabi itu mon itu change koro pare laga itu thakibo hogine moi nijor inaga babi ase aru youtuber itu revival itu apostle Ankit Sachwan tai ahatamde social media te criticize kora laga false prophet ase ina ko laga itu bi mokan hunibo parise moi social media te itu hunia tamde moi nijor jaigina itu apostle to ki meaning ase itu to ki hobo lagi ase moi nijor itu search korise itu apostle kholo to khali 12 disciple isor laga disciple itu kane apostle ko ase hoine moi itu hunise itu ba moi itu jaigina satamte khali itu na hoigine pa laga itu dikhise itu apostle Paul itu bi thake aro apostle itu Matthias koine itu bi apostle Matthew laga mokan itu bi paigina ase itu nimte itu khali 12 disciple itu kan na hoy hoigine moi itu bi ekta koi ase aro apostle laga meaning to hoile dictionary ta saigina ahatamte khali 12 disciple itu likhina taka laga itu ekta jaga te bi napa laga dikise disciple itu apostle laga meaning to hoile to itu isor laga kotha logine bira mano isor laga kotha advocate kora mano isor laga kotha itu protect kora mano missionaries kan itu kan ke apostle ko laga mokan itu dikhibo parise dictionary sa atamte itu ba itu apostle Ankit itu kodo ami laga hisab te saise hole itu to galti na hoy moi naga babibo parise dikhibo parise kila mane itu Ankit to hole tai isor laga kotha logine birai ase tai missionary laga kam kori ase isor laga kotha advocate kori ase itu hole to apostle taki bi kobo pare laga meaning laga apostle laga meaning laga hisab te saise hole mokan itu dikhibo parise itu healing kore laga saise hole mokan youtuber ekdom asurit laga itu dikhibo parise itu healing sakte bi criticize kora laga itu bi dikhibo parise doctor laga proof thakibo lage na bi ko laga itu dikhibo parise mokan youtuber itu dikhibo parise beshi manu bi itu dikhisa hola ekta ama itu cancer liver cancer thakine taige ambulance para anigine aro ambulance te thakine uthibo na parigine pagte feeding kora laga kotha kuro na pare khabo na pare naga thaka laga ekta bal kori dia mokan itu sokhude itu dikhibo parise itu saigena hatamte doctor laga proof itu dekhai dia laga mokan itu dikhibo parise tai uthibo na pare bhat khabo na pare hole bi ek din bitorte tai uthibo parise bhat khabo parise itu prathana korea pichite itu kan saigena hatamte proof mokan dikhibo pare laga dikhise beshi dikhibo parise hole bi itu proof laga moi itu koi ase kon manu bisane khumaise liver cancer itu to pachibole chance na taka laga ekta bimari ase ambulance te khumai thakise khabo na pare kotha kobo na pare hole bi 2 din 1 din bitorte tai bal hoigine dosar kan nichina bohibo pare laga
mokan itu sai tamte ekdom asorit lagise viewers kan nagamana kan apuni kan itu kan hunia tamte ki babi ase dear religious leaders kan apuni kami itu bar itu revival itu sai kine ki monde ahise ineka laga program dangor loise bole manu bishi manu bi itu mon change hole manu bishi manu laga itu atma bachabo para laga moi itu nijor itike itu dikhibo parise apuni kami ineka babi kine asa wala moi ineka babi ase moi bi itu laga revival eteng kuribole bishi mon thakise moi bi ekbar nahole ekbar to jagine eteng kuribo ineka babi thakise holbi manu laga problem to alag alag koine face hoy jay itu bara moi ekbar bi ahine itu program to revival to eteng kuro para na eta mon du laga kotha ita ase bishi manu bi moi nishina thakibo nijor laga problem family laga problem enaka alag alag problem thaka para ahigine itu meeting te thakibo naparina thaka laga mom bikhaina thaka laga itu thakibo hole bi tai last day kali rati ko nishina tai next year arubi ahibo ena kwa itu hudikite bishi kushi paise MBCC leaders kan aru religious leaders kan aru nikan khali kotha koigena itu hornbill itu against na kurigena inaka laga revival crusade healing festival inaka conduct korile he itu laga apuni kan against kurina thaka itu laga opor jitibo moi nagai babigine thake koi thakile bi itu rokhabole to olop dikdar hoy jay kila mane government aro itu religious laga kam to bishi alag ase itu nimite kotha he na hoine apuni kami nijor laga kam kori dibo lage moi nagai babigine jay thake inaka itu revival crusade inaka loi gina jaise hole aste aste itu side te dangor hoi jabo moi na babe itu hornbill festival ina jagate man mona digne revival crusade isor laga kotha koa phele aste aste bishi bishi hoise bole to automatically itu kan hornbill festival itu kan logine aha kabi popular na hoigine aste aste giri jabo hoigine moi itu babi ase on hornbill festival itu saise bole eta culture preserve kora laga eta festival ase main principle to itu ase holbi mokan itu idea itu laga jet na jagine dosara kan alag alag anigine itu festival thaka bara bishi manu itu kushi na palaga itu dikhibo parise naule saise hole to naga manu laga culture itu preserve koribo nimte thaka to bishi bala ase bishi kushi pai holbi itu na hoigine alag alag manu ke biya kora laga alag alag itu kurigine aha bara bishi manu itu mon na dia ho laga itu dikhibo parise nijor laga culture itu preserve koribo itu promote koribo gele western khan laga alag alag khan laga gana khan ahine concert dia ase muina kabi babigna ahi jay aru nijor laga traditional dress itu kan bi nijor kushi kushi design kori ase moi dukan sagine bishi biya pai modify alag alag kori die naga manu laga traditional dress itu kan katti philagine kushi kushi fashion show te bira ase itu kan to hoisolo to ekdom nahwa laga kam ase itu culture preserve na kori kine culture biya kori dia laga dikhibo parise aru nijor laga culture preserve koribo gole itu folk song itu kani competition koribo lagia na hoy western laga rock laga rap song inaka alag alag na kori kine nijor laga tribe kan ani kine itu kan kori thakile itu he bal hobo na hoy moi naga babine jai thake itu bar sabi itu state stadium tate to hole to poila to social media de itu laga kotha to bishi biya bara koi kina ahise pomba laga reporters ka laga kotha huini kina hatam de hansi bole mi mon ho laga report bi mokan huini kina ahise ekdom biya kam kore laga jaga ita ase hole bi itu bar sabi itu laga jaga ahi kine eta revival crusade healing festival lo laga ki matlab ase moi nijor ke babise jaga ekdom lektara jaga ekdom biya kotha koina ja laga jaga eta itu bar itu revival tate bra revival lo laga tate bra manu laga mon chhui dia laga manu laga mon change kore laga manu ke bal kori dia laga jaga eta hoise moi itu babi kina ahatam de
Isor laga Jesus laga Bible te mokan hunie nishina tai to hole to bia manu charia manu itu kan ke bi na charia laga itu kan ke logine tai kam koria laga itu bi dikhibo parise tai laga disciples kan bi saise hole kombi high qualified educated manu itu dikhibo para na halbi fishermen neka bi thake aru manu hisab na kore laga manu kani tai choose kore laga itu dikhibo parise aru itu ekta prostitute manu ekta rendi manu itu kan ke bi tai choose kore laga tai ki laga life bachai dia laga itu kan bi dikhibo parise aru itu saise hole zakia ekdom karap manu tai ke bi choose kore laga itu dikhibo parise vidura moi itu kan huni kina ahatam de jisu to hole to bal manu kan hone bia manu kan ke choose kurina aha laga dikhibo parise itu nimide itu bar inaga jaga bi inaga laga jaga hi choose kurise na ke na hole jaga alag bi thake hole bi itu hi choose kuro para laga tate he ekdom revival sabse dangor Nagaland de itu lo laga itu dikhibo parise ekdom asorit lagise apni kan ki badi ase viewers kan comment section te likhibi hoina moi itu ekta koi ase mokan itia saigena hatam de isor to hole to itia tat bin naga manuke na chare laga mokan itu dikhibo parise isor to mokan ge itia tat bin morong kore laga itu dikhi ase naga manuke othai dibole tai bishi kam kora laga itia dikhi ase itu prayer warriors kan apni kan laga prathana te hi itu kan kam kore laga থাকিবো itu pra apni kan mon tikine naga manu nimide prathana koribo lagi ase naga manu bishi jaga de isor laga age de mokan galti hokina ahi jaise moi hobi apni hobi isor laga kotha na mani kine bishi jaga de mokan tu thaki jaise holebi ite isor to mokan ke mati ase naki naga manu laga itu soul to naga manu laga spirit to isor to bachai dibole ite tat bi mokan ke mati ase bishi manu ite naga manu aru bi isor laga kotha huni bole mon hoina ase isor to loigine nijor laga kuribole mon hoina ase itu pra again and again inaka laga revival aru bi conduct korise hole aru every year inaka conduct korise hole naga manu nimite believers khan nimite bishi bal hobo hogine moi tu eta request kore Glory! yes. Yes, what has happened, Minnie? अपोस्टल जी एक महान गवाही है सो ये 5 महीने पहले ये छत के 4 माले से गिर गए थे इनको ऑपरेशन हुआ लेकिन ये इनको कोई आराम नहीं मिला था ये व्हील चेयर में चलते थे बैसाखी से थे ये कल बैसाखी में आए और ये खुद अपने पैरों से चल के गए अपने पैरों से यहाँ पे आए गवाही देने के लिए हालेलुया आप इनको माइक दीजिए एक बारी आप बैसाखी से आए थे कल आप बैसाखी से आए थे हाँ यीशु ने चंगा कर दिया हाँ कर दिया चंगा अभी चल के दिखाओ Come on church give him glory Hallelujah. Come on. Those who are getting healed, keep coming forward till the time we'll just worship. हर 5-5 मिनट में इनको बाथरूम जाना पड़ता था डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर दवाई चलेगी कुछ नहीं हो सकता इसका जब पहली रात को यहाँ पर आई हैं प्रार्थना रिसीव करके घर गई परमेश्वर ने उसी दिन से इनको चंगा कर दिया पूरी तरह से आजाद हो चुकी हैं 12 साल के ब्लैडर प्रॉब्लम से बहन आप पूरे चंगे क्या होता था आपको क्या होता था मैं बाथरूम से वापस आती थी फिर बाथरूम जाती थी और मैं जब बिस्तर पे सोने के लिए आती थी तो फिर मैं वापस बाथरूम जाती थी मैं बहुत दवा खाई डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते लेकिन फर्स्ट नाइट जब मेरी बाइबल अटेंड करके घर गई मैंने सपने में देखे कि आप मेरा ले हैंड कर रहे हैं मैंने सुबह अपने पति को बताया उन्होंने कहा कि तुमने मिल के आई हो इसलिए सपने में देखी लेकिन मैं बाद में चेक की तो मेरे तो बीमारी चला गया है मैं एकदम ठीक हूँ कोई दवा नहीं खाई मैं 12 साल की बीमारी से प्रभु ने मुझे आजाद किया Come Thank you, on. thank you. Can we give the best praise to Jesus? Apostle, we have a testimony of a sister. It's a marvelous testimony. So she had been suffering from arthritis for 10 years and she had knee pain for 7 years. But on 2nd of December during the healing service, when you prayed, that time she received her healing. And when she went back home, she heard a crackling sound in her knee, on her right knee. Before she wasn't able to squat or bend, but now she's able to squat and bend as well. So arthritis healed. Hallelujah. My Jesus is the healer.
अपोस्टल जी यहाँ पे प्रभु चंगाइयाँ कर रहे हैं। ये भाई बता रहे हैं कि जो वुड का लोग होता है जहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं, ये पूरा इसके लेफ्ट शोल्डर में गिर गया था और 1 साल से वो उठा नहीं पा रहा था, ऐसे नहीं कर पा रहा था। आज प्रार्थना के बाद वो पूरी तरीके से चंगा हो चुका है। Hallelujah. Praise God, Lord. Hallelujah. Yes, yes, yes. Come. जो चंगे हो रहे हैं जल्दी से भाग के, आज आखिरी रात है, आखिरी मौका है यीशु को महिमा देने का इस रिवाइवल में। Come on, run to the front. So our dear brother here had been suffering from he could not hear. He was deaf for 42 years. He was wearing a hearing aid. 42 years deaf. Yes. Okay. And after receiving healing, he's able to hear completely. कान खुल गया आपका? क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है। 42 years से मशीन पहनते थे, हाँ। अब मशीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। Hallelujah. Come on, give him praise. अपोस्टल जी, परमेश्वर ने महान चमत्कार यहाँ पे किया है। ये 18 साल का बच्चा जो बचपन से, जन्म से सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, आज सुनने लगा है और बोल पा रहा है पहली बार। हालेलुया। Can we quickly bring him on the stage? जल्दी Come आओ। on, जल्दी, come on. I just want to show you this testimony. Why? Because many people, I told you first day, many doubters are going to become believers. So, इसके साथ कौन है? Cousin कौन है? ये बचपन से गूंगा और बहरा था? Yes, sir. पापा। ये बचपन से नहीं बोल सकता था कुछ? बचपन से नहीं बोल सकता था, सुन भी नहीं पाता था, पर अभी जब से प्रेयर हुआ तब से पूरा क्लियर बोलने लगा और आप कहाँ पे रहते हो? आप कहाँ रहते हो? मैं नागालैंड से हूँ, नागालैंड। कॉलोनी नागा हाँ। सिमेट्री में रहती हूँ। किसी को डाउट है कि ये एक्टर हैं तो घर का एड्रेस ले लो, जाके चेक कर लेना, डॉक्टर को दिखा देना। Come on, the miracles that we read in the Bible, we are seeing Jesus doing it. अपोस्टल जी यहाँ पे परमेश्वर एक्सीडेंट्स के घावों को चंगा कर रहा है। ये बहन बता रही है 4 साल पहले इनके ऑटो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से बैक पेन होता था, रात को सो नहीं पाती थी, जब वो उठती थी तो भी दर्द में उठती थी, डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाए और अब पहले दिन जब आप प्रार्थना के बाद वो पूरी तरीके से चंगी हो गई है कंप्लीट। Can you tell us what used to happen to you? क्या होता था? रात में नहीं सो पाता था, रात को नहीं सो पाता। कितने टाइम से? 4 years हो गया। 4 years से। Now what happened first day? जब आप प्रे किया और बताया था कि जिसको कहाँ दर्द हो रहा है वो चेक करो, हील हो गया ना, नहीं तो हम चेक किया, बैंड किया, ऐसा लेफ्ट राइट टर्न किया तो सब ठीक हो गया। सारा दर्द चला गया। हाँ। Thank you, Jesus. Jesus is the healer. Okay, I want to say something. I bought some books where I have taught about authority and faith. Okay, we used to sell them for 300 rupees, but just take it for 50 rupees. Okay, but I want you to read the book. Anybody who wants to take it. Okay, I'm not saying free, I'm giving free. I'm not saying free because I don't want you guys to fight and punch one another. But I want you to read that book. Get the word. Get the word in you. And I'm telling you, oh, you will be a victorious generation. Okay, so people who are hearing my voice in the bookstall, don't sell it for 300 anymore. All the books that are remaining, if some person comes and they cannot afford it, please give it to them for free. Yeah, if there is any person who does not have money but he has heart, please give the book for free. Yes, Pastor Sam, what has happened? अपोस्टल जी, ये भाई 2021 से लकवा ग्रसित था। आज इसको 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, लेकिन अब ये खुद चल पा रहा है 2021 के बाद। He was paralyzed. Come on, come on, come on, come on, come on. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, give him praise, give him glory. यीशु जिंदा जिंदा, यीशु जिंदा जिंदा जिंदा।
There's such a good news, man. God is so good. The video that we showed you by mistake of that auntie, we just got a report that she's also healed. Hallelujah. Come on, can you lift up your hands? Oh man, what a privilege. What a privilege to see what Jesus is doing in our generation. Yes, Pastor Sam, yes. Apostle, our dear sister here has been healed of multiple sicknesses. She could not lift up her hand, but now she's able to lift up her hand completely. She could not hear partially. For 3 years, she's now able to hear partially. We've also checked it, and she was also healed of migraine and as well as sinus. So yeah, she has Sister, been so healed. आप सुन नहीं सकते थे अच्छे से? Yes, yes. अभी क्या हुआ? I just kneeled down and prayed, and then I got healed from God. You got God healed is from good. that? Yeah. Come on, God bless you. God bless you, sister. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Oh man, every time I see. अपोस्टल जी, इस भाई को 5 साल से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था. डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया. 2 साल दवाई भी खाया, कुछ नहीं हुआ. आज अभी कह रहे हैं जैसे आपने प्रार्थना किया पूरी तरह ठीक हो गया है. सांस ले पा रहा है 5 साल बाद. हालेलुया. आप मुझे बताओ भाई, you were not able to breathe अच्छे से? Yes, sir. I could not able to breathe for complete 4 to 5 years. Yes. I was taking medicine secretly without telling my parents. And sir, when you just stop praying, when you ended with your prayer, I felt that I got healed. So I opened my eyes and I tried breathing as quick as possible. And praise the Lord, I got healed. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया. अपोस्टल जी, हमारे साथ ये बहन है, इनको 6 साल से भी ज़्यादा साल हो गए कि इनके जो घुटने थे इतने दर्द होते, फिजियोथेरेपी लेते थे और डॉक्टर ने ये बोला था आप नीचे मत बैठिए, अवॉइड करिए. लेकिन ये दूसरे दिन एक्सपेक्ट करके आई, बोली मैं बैठूंगी और आज वो पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Maybe 1, 2 more testimonies and then we are. Who wants to say?